start question number second of the exercise 2.3. In last video में हमने Rolle's theorem start किया था. That is, what are the different conditions for Rolle's theorem, how to verify the Rolle's theorem or the validity of Rolle's theorem depending on this. Or question number first already we have solved. Then remaining question number second onward we solve in this video. Then what are the different conditions for the verification of Rolle's theorem? That is, if a given function f of x is continuous in the given interval, differentiable, as well as f of a is equal to f of b, then there exists a point C such that the value of a derivative at that point C is 0. That is, f dash, there exists a point C in the interval AB such that the value of f dash of C is equal to 0. Then if all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied, then we find the point C belongs to AB such that f dash of C is equal to 0 for the verification. Okay, which functions are continuous and differentiable? That is, a polynomial function is continuous, differentiable, trigonometric function, inverse trigonometry, exponential, logarithmic. Okay, all this type of a function is there in the given example. All this type of a functions are there. Then directly we write this function is continuous, this function is differentiable, and then we find the value for f of a and f of b. Okay. Then also we see the question number second of the exercise 2.3. Then देखते हैं क्या है question number second. That is, given an interval AB that satisfy hypothesis of Rolle's theorem. For the function f of x is equal to x raised to power 4 plus x square minus 2, it is known that a is equal to minus 1. Then find the value for b. Okay, in last one example, we have to show that all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. That is, we showed that for the given function, f of x is continuous, f of x is differentiable, and then we find f of a, f of b. लेकिन यहाँ पे क्या given है? It is directly given an interval AB, जो भी given interval है, for that satisfies the hypothesis of Rolle's theorem. Means it already all these conditions are satisfied. Here we don't verify any condition, that is whether it is continuous, differentiable, or whether f of a is equal to f of b है या नहीं है. Okay, all these conditions are already satisfied this function in the interval AB, and we have provided the value of function is given. It is known that a के जो इंटरवल गिवन है AB, उसमें a की वैल्यू गिवन है क्या है, a is equal to minus 1, and we have to determine just value for b की वैल्यू फाइंड आउट करें. What is the value for b for the given interval? तो देखते हैं स्टूडेंट, all the hypotheses of Rolle's theorem are satisfied. मतलब all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. मतलब क्या है, फंक्शन f of x continuous है, differentiable है, and f of b is equal to f of b. All these three conditions are satisfied. f of x is continuous on क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है, एंड डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, ओपन इंटरवल. ओके, रिमेम्बर, डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल. दिस इज ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, as it satisfies all the hypothesis, then this f of a and f of b की value भी almost it is also equal because it satisfies all the hypothesis of Rolle's theorem. The f of a and f of b भी equal है. Then what we have provided the function f of x function is provided. क्या है given? X raised to power 4 plus x square minus 2 is given. Then we use this condition f of a is equal to f of b, and then we find f of a की value find out करेंगे, f of b की value find out करेंगे. As both are equal, then what we get by substituting a is equal to minus 1 substitute करने के बाद जो भी value मिलेगी फंक्शन की, this value and f of b की value क्या होनी चाहिए, इक्वल ही होनी चाहिए. ठीक है, then we substitute a is equal to 1, तो f of a is equal to f of minus 1. ठीक है, a की value क्या है, minus 1 है, तो पुट करते हैं minus 1 raised to power 4 plus minus 1 square minus 2. तो इवन नंबर raised to 4 क्या आता है, minus 1 raised to 4, that is positive. Minus 1 square is also positive, that is 1 plus 1 minus 2, तो क्या होगा, 0 होगा. Therefore the value of minus 1, मतलब f of a की जो value है, that is f of minus 1 की value क्या है, 0 है. Then as f of a is equal to f of b given condition है, ठीक है, as f of a is equal to f of b, that is it satisfy
all the conditions of Rolle's theorem. Then both must be equal. Already we are given. Okay. Then we find f of b. तो x की जगह given function की value में x की जगह क्या सबस्टिट्यूट करते हैं, b पुट करते हैं. ठीक है. Put x is equal to b in the function value. तो f of b की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b raised to power 4 plus b square minus 2. Then we have find here value for b. We call suppose this as equation 1 and this is our equation 2. Okay. Then from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, what this equation 1 and 2 implies, that is from equation 1 f of a and f of b both are equal and second equation क्या है, f of a की value 0 है. As both are equal है, then this value of f of b की जो value b square plus b raised to 4 plus b square minus 2 is equal to also 0 हो जाएगी. ठीक है. Therefore from equation 1 and 2, what this implies, the value for b raised to power 4 plus b square minus 2 is also equal to 0. Here we substitute the value of b such that we get simplified term as 0. Then we put करते हैं, put suppose b की value substitute करते हैं 1. Then what we get simplification as, if we substitute b as a 1, whether this equation is satisfied, that is we have to find the value for b such that this equation is get satisfied. Then this is a solution for this raised to 4th power equation. Okay. Then we substitute करते हैं b is equal to 1 substitute करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा. b raised to, that is 1 raised to power 4 plus 1 square plus minus 2. Then this has 1 1, that is 2 minus 2, we get 0. Then b is equal to 1 is a solution. Then when a is equal to minus 1, what we get, b is 1. Then also there is another case also, if we substitute b is equal to minus 1, तो also we get 0 because minus 1 raised to 4 क्या होगा, minus 1 raised to 4 plus minus 1 square minus 2 is equal to, this is also 0 because 1 plus 1 minus 2, this is also 0. लेकिन यहाँ पे जो भी given है by the conditions of Rolle's theorem, the function f of x, that is a curve which is continuous and differentiable on the interval AB. Okay, we have to find the interval. This curve is continuous and differentiable on the closed interval, that is it is continuous on closed interval, differentiable open interval. तो जो भी a b की वैल्यू होगी, जो भी value of a, that is जो भी a and b की वैल्यू होगी which is in the form of a interval. Okay, then here a is minus 1, already we are given a as a minus 1 and अगर हम consider करेंगे b is also minus 1, then we get a single point. Okay, then that's why we have considered b is equal to 1 as a solution. Okay, then what we get, the solution when a is equal to minus 1, b is equal to 1, because b is equal to 1 satisfies this equation. Then what is the solution? b is equal to 1 is the solution. What we do here, we are already given an interval AB that satisfy hypothesis of Rolle's theorem for the function. तो इस function के लिए a interval जो भी hypothesis है Rolle's theorem की, that is it is differential, it is continuous, it is differentiable, f of a is equal to f of b, all these three conditions are satisfied. Then directly we use as f of a is equal to f of b, तो we find f of a की value find out की, then f of a की value क्या मिली, 0 मिली. Then we find f of b, that is in the given function की value में x की जगह क्या substitute किया, b substitute किया. Then we get a raised to 4th degree का equation मिला. लेकिन as f of a and f of b equal है and f of a की value 0 है, तो ये जो equation होगा which is also compared to 0 होगा, क्योंकि f of a and f of b की value क्या होती है, equal होती है by conditions of Rolle's theorem. Okay, if all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then f of a is equal to f of b होती है. ठीक है. Then by using this condition we get this is equal to 0. Then we find the value for b such that this equation is satisfied. Then we get value for b as a 1. Then this equation is satisfied. Then also if we substitute b is equal to minus 1, then also it's satisfied. But here the Rolle's theorem for a function f of x on a closed interval AB such that it is continuous differentiable, we want a interval form. Then we take b is equal to 1. Then we get a interval क्या होगा यहाँ पे, a is minus 1 and b as a 1. That is it is continuous differentiable on the closed interval, that is continuous on closed interval and differentiable on open interval, and f of a is equal to f of b की value equal है. Then all the hypotheses of Rolle's theorem are satisfied for which interval, minus 1 to 1. ठीक है. That's why we have take plus 1 not minus 1. If we consider minus 1, we get a single point minus 1. That is a is minus 1, b is also minus 1. Okay. Then that's why we have considered b is equal to 1. Then देखते हैं next question.
Question number third, verify Rolle's theorem for the following function. So first function is f of x is equal to sin x plus cos x plus 7, and here x belongs to the interval 0 to 2 pi. Verify the Rolle's theorem means we have to show that all the conditions of Rolle's theorem satisfied by this function, as well as we have to find the point C such that f dash of C is equal to 0. Whenever verification is required, then what we have to show that you have to show that the function f of x is continuous on closed interval, differentiable on open interval. Next, f of a is equal to f of b, and then there exists a point C belongs to the open interval 0. That is, whatever the interval is given, then there exists a point C belongs to this open interval such that f dash of C is equal to 0. तो we have to find the point C. जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पे हमें क्या चेक करना था, that whether the Rolle's theorem is valid or not valid. Then at that time we just check continuity, differentiability, and whether f of a is equal to f of b है या नहीं है. ठीक है, if all these three conditions are satisfied, then Rolle's theorem is valid for the given type of function. लेकिन यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, like that is validity is also checked, as well as we have to find the point C. ठीक है, belongs to the open interval, that is a C point find out करना है. Whenever verification is required, you have to show all this, that is the continuity, differentiability, f of a is equal to f of b, as well as we have to find the point C. Then here we have to verify this. Then what we are given a function, देखते हैं first का solution, f of x is equal to sin x plus cos x plus 7 is given. ठीक है, then we know that is in first video already, that is name of Rolle's theorem. We have studied which functions are continuous and differentiable, that is the polynomial functions, trigonometric function, inverse trigonometry, exponential, and logarithmic function. They are continuous on the given domain. Okay, then यहाँ पे given domain और given interval क्या है, 0 to 2 pi. Then this function is a trigonometric function, then it is also continuous and differentiable. Then directly we write it is continuous, differentiable on the given domain. Okay, or the given interval. Then therefore as this f of x is trigonometric function, okay, as f of x is trigonometric function, then it is continuous and differentiable on its domain. Okay, condition of Rolle's theorem is that f of x is continuous on the close interval. Okay, for continuity we have write close interval. And second condition, that is the f of x is differentiable on open interval. Okay, 0 to 2 pi. Why it is differentiable on open interval? The reason we have see at the time of Rolle's theorem. Okay, you can also see this. Then it is differentiable on open interval, continuous on close interval. Then we check f of a is equal to f of b है या नहीं है. तो यहाँ पे क्या है गिवन, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है 2 पाई. देन वी फाइंड f of a, देयरफॉर f of a मतलब क्या होगा, f of 0. तो जो भी गिवन फंक्शन की वैल्यू, उसमें x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी, 0 सब्स्टिट्यूट करनी. देन सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या है गिवन फंक्शन की वैल्यू sin 0. तो sin 0 क्या होता है, 0 ही होता है, cos 0 plus 7. ओके, that is sin 0. sin कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, पाई 2 पाई ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे भी sin 0 होता है. एंड cos पाई की वैल्यू 0 कब होती है, that is pi by 2 के मल्टीपल पर cos की वैल्यू 0 होती है, अदरवाइज द वैल्यू एग्जिस्ट. तो यहाँ पे क्या है, sin 0 की वैल्यू 0 पे 0 है एंड cos 0 की वैल्यू 1 है. Therefore you have to remember all the trigonometric values for the different angle. Okay, then 1 plus 7, what we get this as 8. तो f of a की जो वैल्यू है, that is the f of 0 की वैल्यू क्या है, f of 0 is 8. Okay, we have find f of 0. तो नेक्स्ट का फाइंड आउट करना है f of b, मतलब f of 2 pi. तो फाइंड आउट करते हैं गिवन फंक्शन की जो वैल्यू, उसमें x की जगह 2 pi सब्स्टिट्यूट करना है. तो sin 2 pi प्लस cos 2 pi प्लस 7. ओके, तो साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 पे, एज वेल एज
मल्टीपल्स ऑफ ऑल पाई, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, वॉट एवर, साइन इज 0 एंड कॉस 2 पाई की वैल्यू एग्जिस्ट होती है पाई, 2 पाई, 3 पाई पे. ओके, इट वेरीज +1 to -1. ओके, देन cos 2 पाई, here sin 2 pi is 0 and cos 2 pi की वैल्यू क्या है 1 है and this is 7 is equal to 8. okay, that is cos is pi by 2 के मल्टीपल पर 0 होता है and pi के मल्टीपल पर that is cos pi, cos 2 pi, cos 3 pi. तो cos pi 3 pi जो ऑड है ना वहां पे cos की वैल्यू -1 आती है एंड अगर इवन है 2 पाई 4 पाई cos की वैल्यू 1 आती है. ठीक है, एंड 0 पे भी 1 ही आती है. इफ ऑड मल्टीपल्स है तो -1 होगा cos की वैल्यू, दैट इज cos पाई की -1, cos 3 पाई की -1. ओके, जस्ट रिमेम्बर ऑड मल्टीपल्स की -1 होती है एंड इवन मल्टीपल पे +1 होती है. ठीक है, तो क्या है 80. देन f of 0 is also 80, f of b that is f of 2 pi is also 8. therefore this f of 0 is equal to f of 2 pi. मतलब क्या है, this f of a is equal to f of b. Then all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Okay, therefore what we write, all conditions of Rolle's theorem are satisfied. Theorem are satisfied. That is, the statements of Rolle's theorem is that if f of x is continuous on closed interval, differentiable on open interval, and f of is equal to f of b होता है, then there exists at least one point C belongs to the open interval AB such that f dash of C is equal to 0. तो यहाँ पे भी all three conditions are satisfied. Continuous, differentiable, f of a is equal to f of b. Then there exists a point C belongs to the open interval 0 to 2 pi such that at that point C f dash of C is equal to 0. ठीक है, therefore all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Then we have to find the point C. Then we find the point C such that f dash of C is equal to 0 and the C is belongs to the open interval 0 to 2 pi के बीच में. That is according to the conditions of Rolle's theorem, there exists a point C such that f dash of C is equal to 0. तो given function क्या है, f of x, उसका डिफरेंशिएशन करना है. तो f of x is sin x plus cos x plus 7. Then we differentiate this, then we get f dash of x. तो f dash of x क्या होगा, sin का डेरिवेटिव होगा cos x and cos का क्या होगा minus sin x and constant क्या होता है 0. तो c x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, c सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो f dash of c की वैल्यू क्या होगी, f dash of c is equal to, that is f dash of c is equal to 0 है. Then this derivative is compared to 0. Okay, then when we substitute this as a c, x की जगह c substitute करेंगे, f dash of c is equal to 0. Then f dash of c is equal to 0 as, then this f dash of c की वैल्यू जो है वो compared to 0, cos c minus sin c is equal to 0. तो अगर 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, from this cos c is equal to sin c. Then we have to find the point C or the value of C such that we get cos c is equal to sin c. दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए. That is, we have to find the value of C. C क्या है, एंगल है यहाँ पे, because cos and sin. तो C is the angle. We have to find the value of C, that is the sum angle, such that cos की वैल्यू उस एंगल पे एंड sin की वैल्यू उस एंगल पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. एंड दिस एंगल इज लाइज इन विच इंटरवल, 0 to 2 pi के इंटरवल में लाई होना चाहिए. ठीक है, दैट इज दिस C बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2 pi. That is greater than 0 से greater than and 2 pi से less than. Then we have to find the value of C such that the cos की वैल्यू एंड sin की वैल्यू एट ए पॉइंट C पे सेम होनी चाहिए. ओके, देन फॉर विच एंगल द cos एंड sin हैविंग द सेम वैल्यू, वी नो दैट pi by 4 पे सेम होती है. दैट इज हियर, if you consider this as the x-axis, this as the y-axis, then this has pi by 2 rotation, this has pi, this has 3 pi by 2, and this has 2 pi after completing one rotation.
तो ये π/4 की वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या होता है दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। देन दिस वैल्यू ऑफ c इज π/4, π/4 पे क्या होती है साइन π/4 इज 1/√2, cos π/4 इज ऑल्सो 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम है, π/4 मतलब 45 डिग्री। देन ऑल्सो हियर दैट इज अ π/4। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर कंसिडर करेंगे दैट इज दिस पाई माइनस π/4, दैट इज पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस π/4। देन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई प्लस टाइम होगा π/4, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा दैट इज 2 पाई माइनस π/4 ले सकते हैं, या 3π/2 प्लस π/4 भी ले सकते हैं, एंड इट इज लेस देन 2 पाई माइनस π/4 बिकॉज यहाँ पे π/4 है, दैट इज अप टू दिस रोटेशन, ओके, अप टू दिस रोटेशन। देन 2 पाई से π/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देन दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू व्हिच लाइज इन 0 to 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। Then when f dash of c is equal to 0, this cos c minus sin c is equal to 0, we get the condition cos a is equal to sin c, then we have to find the value of c such that the cos of this value as well as sin of this value both are equal. तो first value क्या मिली π/4, because cos π/4 is 1/√2, sin π/4 is also 1/√2, and this c lies between is 0 to 2 पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। then π/4 is lies between 0 to 2 पाई के बीच में। then second यहाँ पे भी पाई 1/√2 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पाई माइनस π/4 रोटेशन लेंगे फ्रॉम दिस टू फ्रॉम दिस, देन क्या होती है वैल्यू cos पाई माइनस π/4 एंड sin पाई माइनस π/4 की वैल्यू अपोजिट मिलती है, -1/√2, एक की -1/√2 होती है एंड एक की 1/√2 होती है। वी वांट बोथ, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वली होनी चाहिए, एदर पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इट इज इक्वल, ठीक है। देन तो यहाँ पे अगर फाइंड आउट करेंगे sin पाई माइनस π/4 एंड cos पाई माइनस π/4 दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, अपोजिट होती है, एक की 1/√2 आती है, एक की -1/√2 आती है, ठीक है। देन वी डोंट कंसिडर दिस एंगल। देन नेक्स्ट अगर दिस कंसिडर करेंगे पाई प्लस π/4, तो we get both values are equal, that is -1/√2 -1/√2, okay। then we consider this as well as this is less than 2 pi से less than है। then next अगर we consider this 2 pi minus π/4 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी sin and cos की वैल्यू अपोजिट होती है, that is sin of 2 pi minus π/4 and cos 2 pi minus π/4 की वैल्यू इक्वल नहीं है, एक की पॉजिटिव है एक की निगेटिव, दैट इज एक की -1/√2 है तो एक की 1/√2 है, तो वी डोंट कंसिडर दिस। देन अगर अगेन वी कंसिडर दिस रोटेशन, दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग वन रोटेशन एंड अगेन वी टेक दिस वैल्यू π/4, तो क्या होगा 2 पाई प्लस π/4 हो जाएगा, मतलब दिस वैल्यू इज 2 पाई प्लस π/4, दिस वैल्यू इज 9 pi/4 and this 2 pi plus something है, मतलब 2 pi से ग्रेटर देन, we want the value between 0 to 2 pi के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। एंड एज वेल एज उसने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, दिस cos ऑफ दिस एंगल एज वेल एज साइन ऑफ दिस वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल ही होनी चाहिए, साइन से इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू से भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल है विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल π/4 एंड पाई प्लस π/4 दोनों एंगल दिस कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर वी गेट द वैल्यू फॉर सी की वैल्यू क्या क्या है π/4 है, एंड सेकंड वैल्यू क्या है सी की, दैट इज पाई प्लस π/4 मतलब 4 प्लस पाई मतलब 5 π/4, 5 π/4 इज लेस देन 2 पाई से लेस देन है, ठीक है। देयरफॉर सी की वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू π/4 और नेक्स्ट वैल्यू इज c इज इक्वल टू 5 π/4। नेक्स्ट वन एग्जांपल, f of x is equal to sin x by 2, interval is 0 to 2 pi. Then the given is a trigonometric function. Then we know that trigonometric function is continuous and differentiable on its own domain, okay. Then the function is continuous differentiable as it is a trigonometric function, therefore we write as f of x is trigonometric function, then it is continuous and differentiable on its domain, okay। then we directly write it is continuous and differentiable, तो therefore we write first condition क्या होती है, f of x is continuous on क्लोज इंटरवल 0 to पाई पे कंटिन्यूस है। सेकंड क्या होती है डिफरेंशिएबल, दैट इज f of x is differentiable
on open interval 0 to 2 pi. That is why open interval the result we have seen at the time of Rolle's theorem. Then third क्या होते हैं, that is we have to check whether f of a and f of b की वैल्यू इक्वल है या नहीं. If f of a is equal to f of b की वैल्यू इक्वल है, then all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. Then there exists a point C and we find this point C. Then this is the verification. ठीक है. Then we check, what we check, whether f of a is equal to f of b, both are equal or not. Then for that we find f of a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f of b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 0 है, b की वैल्यू क्या है 2 पाई. देन वी फाइंड आउट करते हैं f of 0. तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0.2 है, दैट इज 0 upon anything 0. एंड देन साइन ऑफ 0 क्या होता है 0. ओके, पाई बाय पाई मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन 0 है, 0 पे भी 0 होता है. देन नेक्स्ट that is here f of 0 is 0, then f of a मतलब क्या, f of 0 and this value क्या है 0 है. then second value find out करनी है f of b की. ठीक है. then this has we have find f of a is equal to, then we have to find the value for f of b की value find out करनी है. b क्या है 2 pi, तो find out करते हैं sin of 2 pi upon 2. then this 2 get cancel and pi 2 pi all multiples पे sin की value क्या होती है 0. Therefore all multiples of pi पे sin की वैल्यू क्या होती है 0. that is pi 2 pi 3 pi all multiples पे 0 होती है. then sin 2 pi is 0. therefore what we get, f of 0 is equal to f of 2 pi. दोनों की वैल्यू इक्वल है, मतलब दिस f of a की वैल्यू इक्वल है f of b की. then this it is a continuous, it is a differentiable, f of a is equal to f of b. that is all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. then we find the point C. okay, therefore all conditions of Rolle's theorem are satisfied. Then we find the point C. We find point C. Okay, such that this f dash of C की वैल्यू क्या होगी 0 and this C is belongs to the open interval 0 to 2 pi के बीच में होना चाहिए. ठीक है. then we find the point C. then क्या है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. f of x is sin x by 2. then डेरिवेटिव ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x by 2 into डेरिवेटिव ऑफ x by 2, चेन रूल. x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 कांस्टेंट है, आउटसाइड में ले, x का डेरिवेटिव 1. ओके, 1/2 into डेरिवेटिव ऑफ x is 1. तो क्या है cos x by 2 into 1/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ f dash of x, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू. ठीक है. दैट इज हियर we write its derivative f dash of x is equal to, then f dash of x की वैल्यू क्या है, f dash of x is cos x by 2 into 1/2 है. तो f dash of c की वैल्यू क्या होगी, as f dash of c is 0, तो all this term is compared to 0 हो जाएगी. then as f dash of c is equal to 0, then this f dash of c मतलब this cos c by 2 into 1/2 is compared to 0. this value of f dash of c की वैल्यू क्या है, right here this f dash of c की जो वैल्यू है this is cos c by 2 into 1/2 है. ठीक है. this as cos c by 2 into 1/2 है. then we know that when a into b दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो either a is 0 और b is 0. okay, either a is equal to 0 होता है और b is equal to 0 होता है. this 1/2 is not equal to 0. it is a real number, that is an integer. then this 1/2 is non-zero number, then this second term must be a 0 होनी चाहिए. okay, therefore since this 1/2 is not equal to 0, what this implies, this cos c by 2 is equal to 0. then we find the value of c की ऐसी कौन सी वैल्यू है, that is we find the value of c की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे cos c by 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए. ठीक है. तो cos की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, मल्टीपल्स ऑफ ऑल पाई बाई 2 के मल्टीपल्स पर, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0 होती है. तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे, डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ c इज पाई
3 pi, 5 pi, 7 pi. That is, when we substitute this c as a pi, we have determined the value of c, not c by 2. We have to find the value for c such that f dash of c is equal to 0. तो c की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos pi by 2 is 0. 3 pi by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 0. 5 pi by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, that c has 5 pi, तो 5 pi by 2 भी 0. All multiples of pi by 2 पे क्या होती है, 0 होती है. Then what is the value of c, which that is, what is the value of c such that f dash of c is equal to 0 भी होता है and c is within the interval 0 to 2 pi के बीच में भी है. तो this is the only value which lies between 0 to 2 pi के भी बीच में, and this cos pi by 2, when we substitute c as a pi, this cos pi by 2 भी 0 है, मतलब f dash of c भी 0 है. Then the value of c is pi. Therefore we get this c is equal to pi. Then what to solve? Just give an example. We have to verify the Rolle's theorem. मतलब it is continuous, differentiable. Then we check whether both f of a and f of b equal है या नहीं. Both are equal. Then there definitely exists at least one point c which satisfies this condition. That is, f dash of c is equal to 0, and this c lies in the interval 0 to 2 pi के बीच में होना चाहिए. Then we take the derivative. Compare is equal to 0. तो यहाँ पे a into b का फॉर्म मिलता है. a b is 0. तो either a is 0 or b is equal to 0 होता है. This 1/2 is a real number. Then this is not equal to 0. Then cos c by 2 value is 0. Then for which value of c this cos is 0? Cos 0 कहाँ पे होता है, multiples of pi by 2 के. तो c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर we substitute c as a pi तो pi by 2 0 होता है, cos pi by 2 0 होता है. c as 3 pi substitute करेंगे तो cos 3 pi by 2 भी 0 होता है. 5 pi substitute करें 5 pi by 2 भी 0 होता है. लेकिन हमें ऐसी वैल्यू चाहिए c की कि जो एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है, एंड दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 2 pi के बीच में भी होनी चाहिए. तो इसी कौन सी वैल्यू है, पाई की वैल्यू. c is equal to pi. देन देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल. ओके, देन थर्ड एग्जाम्पल सेम तरीके से सॉल्व करना है. जस्ट शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्या क्या करना है. गिवन फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है. देन दैट पॉलिनोमियल कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है ऑन इट्स डोमेन पे. तो डायरेक्टली वी राइट एज f of x इज पॉलिनोमियल, एज f of x इज पॉलिनोमियल फंक्शन, देन कंटीन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है. देन फर्स्ट क्या होता है, continuous on closed interval, differentiable on open interval. Okay, we have to write this. That is continuous on closed interval. Second क्या होगा, differentiable on open interval 1 4 पे. Then these two conditions satisfied. Then we have to check whether f of a is equal to f of b है या नहीं है. Then we check करते हैं, check f of a is equal to f of a. तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है. b की वैल्यू क्या है, 4 है. देन वी फाइंड आउट करते हैं f of 1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 minus 5 plus 9 मतलब 10 minus 5 5 हो जाएगा. देन f of 4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 4 square 16 minus 20 plus 9. तो a b क्या होगा, 16 plus 9 that is 25 minus 20 is 5. both are equal है. Then there exists a point c. Then we have to find the point c. Then directly we find out करते हैं point c. You have to write in proper form such that जो भी हमने अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरीके से आपको राइट करना है. ठीक है. तो जस्ट वी आर सॉल्विंग शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं. Then next there exists a point c such that all these 3 conditions are satisfied. Then there exists a point c belongs to open interval 1 to 4 के बीच में. Then we find the point c. Then क्या है, f of x की वैल्यू, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. x square minus 5x plus 9 है. तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f dash of x. Then 2x minus 5. Then f dash of c is 0. Okay. Then there exists as a point c belongs to 1 to 4 such that f dash of c is equal to 0 है. तो ये क्या होगा, 2c minus 5 is equal to 0. तो 2c is equal to क्या होगा, 5. तो c की वैल्यू क्या है, 5 by 2. And this lies between 1 to 4 के बीच में, because this is 2 point something. Then it lies between 1 to 4 के बीच में. Then we get a point c such that it satisfies this condition and it lies in the open interval 1 to 4 के बीच में.